अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएस से और अब तक की खुसूसी रिपोर्ट के साथ मैं हूं रानी अंदली। पाकिस्तान का आलमी अमन कायम रखने में किरदार वाकई काबिल सताइश है, जिसका सिलसिला 6 दहाइयों से भी ज़ायद अरसे पर मुहित है। जहां एक तरफ पाकिस्तान में अमन नशीनों में अपने दस्ते फराम किए, वहीं दूसरी तरफ इसका अज़्म आलमी इस्तेहकाम को मजबूत बनाने में भी अहम है। मगर सिर्फ तादाद नहीं, पाकिस्तान की शराकत दारी इससे भी आगे है, खुसूसन अमन नशीनों में ख़वातीन की शमूलियत के हवाले से। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह कर रही हैं कराची से ब्यूरो चीफ सोबिया खान अपनी इस खुसूसी रिपोर्ट में। I now give the floor to the distinguished representative of Pakistan. Madam President, I would like to begin by expressing our appreciation to the outgoing co-chair, Ambassador Manisa Rambali, Permanent Representative of St. Lucia, and the reappointed co-chair, Ambassador Cornel Feruta, Permanent Representative of Romania, for their leadership in steering the process of revitalization during the previous UNGA session. We congratulate Ambassador Feruta and Ambassador Mathu Joyini, Permanent Representative of South Africa, for their appointment as the new co-chairs. We are confident they will make a substantive contribution to the General Assembly's revitalization. Pakistan aligns itself with the statement delivered by Algeria on behalf of NAM, and we would like to add a few points in our national capacity. Madam President, the UN General Assembly is the only principal organ with universal membership. It enjoys extensive authority and functions under the UN Charter as set out in Articles 10, 11, 12, 14 and 35. The only limitations arise from the primary role of the Security Council for the maintenance of international peace and security as set out in Article 12. Pakistan welcomes the several recommendations presented during the consultations on this item. We agree that the agendas of the Assembly should be rationalized, items amalgamated, and redundant issues dropped. We should streamline resolutions and make them shorter and more action-oriented. The Secretariat's reports should be further improved, and we can better organize the plenary and main committee meetings, conduct more focused discussions, adopt more specific decisions, and save money. However, the deficits in the Assembly's performance do not arise from any deficiency in its charter authority or its working methods. While we need to improve the Assembly's processes and methods of work, the revitalization of the Assembly is a political issue, not one of process only. The Assembly's deficiencies primarily arise from the inability and, in large measure, the unwillingness of some major member states to allow the Assembly to fully utilize its authority and potential. Madam President, under the UN Charter, the General Assembly's role is broad and far-reaching. It covers political, security, economic, social and human rights, as well as humanitarian issues, norm-setting and treaty-making roles, as well as the financial and administrative management of the organization and its secretariat. The General Assembly also has vast complementary and residual authority under the Charter in relation to the promotion and preservation of international peace and security. This authority is explicit when the Security Council is unable to act or is prevented from acting. Since the Security Council acts on behalf of the entire UN membership, it should report more frequently and comprehensively to the General Assembly, especially whenever the Council authorizes action under Chapter 7 of the Charter. The Assembly's role on peace and security also extends to addressing the root causes of conflicts and disputes, in promoting the peaceful resolution of disputes in accordance with principles of the UN Charter and UN resolutions, including through the provisions for mediation, arbitration, and good offices. The Assembly also has the principal responsibility to address the so-called thematic aspects of peace and security, such as environment and peace, women, peace and security, and the nexus between peace, development, and human rights, the three pillars of the UN.
To enhance the credibility of its decisions, the GA should also establish a dedicated mechanism to monitor the implementation of its own resolutions. पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली को मजबूत बनाने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर हुक्मरानी को मजबूत बनाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली को फ़ाल किरदार अदा करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान का कहना है कि जनरल असम्बली की कमज़ोरी की बुनियादी वजह बड़े ममालिक की जानिब से अपनी पूरी सलाहियत से काम करने से रोकना है। पाकिस्तान के कान मकाम मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर उस्मान जदून ने कहा है कि जनरल असम्बली तमाम ममालिक का वाहिद मुश्तरका प्लेटफॉर्म है और इसे सलामती कौंसिल से ज़्यादा इख्तियारात हासिल होने चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि सलामती कौंसिल को जनरल असम्बली को अपनी कार्रवाइयों के बारे में बाकायदगी से आगाह करना चाहिए। पाकिस्तान ने जनरल असम्बली की करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए एक ख़ास निज़ाम बनाने की तजवीज़ भी पेश की है। इसके अलावा पाकिस्तान ने जनरल असम्बली को बैनुल अक़वामी क़वानीन बनाने में ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करने पर भी ज़ोर दिया है। सफ़ीर उस्मान जदून ने कहा कि पाकिस्तान जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल के दरमियान ताउन को बढ़ाना चाहता है और जनरल असम्बली के सदर दफ्तर की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात का भी हामी है। पाकिस्तान ने जनरल असम्बली में शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया है। पाकिस्तान चाहता है कि जनरल असम्बली को ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात दिए जाएं। पाकिस्तान ने जनरल असम्बली की करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए एक ख़ास निज़ाम बनाने की तजवीज़ भी पेश की है। पाकिस्तान जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल के दरमियान ताउन को बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान जनरल असम्बली में शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाने पर जोर दे रहा है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में एक अहम मुल्क है और इसकी जानिब से जनरल असम्बली को मजबूत बनाने का मुतालबा करना एक अहम कदम है। ये मुतालबा आलमी सतह पर हुक्मरानी को बेहतर बनाने में मददगार भी साबित हो सकता है।